Hi students, in my previous lecture on the Indian Evidence Act, we were on section 32, statements of witnesses, of persons who cannot be called as witnesses because they are either dead or they cannot be found, or they have become incapable of giving evidence, or in the eyes of the court it would entail undue expense or delay. In such cases, there are 8 conditions in which statements of those persons can be used as evidences. We were on the dying declaration in my last lecture. Clause 1 dealt with dying declaration. While talking about dying declaration, we saw firstly a dying declaration, because of the very presumption which goes along with it, that a person who is dying will not lie in normal circumstances. That is why the level of its probative value is very high. We discussed all the principles which govern dying declaration in my last lecture, and then we discussed the various aspects of its evidentiary or probative value which a court can use while using a dying declaration as a substantive piece of evidence. As I told you that we will divide the whole topic into 5 major parts. The first 2 parts we have discussed. Firstly, we discussed the principles which govern a dying declaration, and secondly, what is the evidentiary value of a dying declaration. Now we come to the other 2, which is form and content. Let's go to that. Now, before I start the form and content, I would first quickly like to give you some dictations regarding the basic aspects. What is a dying declaration? I would like to quote the Allahabad High Court, Sant Gopal versus State of Uttar Pradesh. Sant Gopal versus State of Uttar Pradesh, 1995, Allahabad High Court. Words dying declaration mean a statement, written or verbal, of relevant facts made by a person who is dead regarding the cause of his death or the circumstances which led to his death. Now, a dying declaration, please remember, there are many aspects. When I say form and content, a dying declaration is not complete unless full names and addresses of the persons who are involved in it are given. So, merely giving some first names is not enough, because many एक ही नाम के बहुत सारे लोग होते हैं. So chances are there कि कोई गलत आदमी ना इसमें फंस जाए. That is why the dying declaration must contain the details of the persons who are involved. On this we have Guwahati High Court, Kajal Sarkar versus State of Assam, 1993, Guwahati. Now, when I say causing death does not actually mean that who actually caused death, but it will also include those persons who are involved in conspiracy, abetment वगैरह. तो इसका मतलब सिर्फ causing death को हमने सिर्फ exact नहीं लेना कि जिसने छुरा मारा या जिसने गोली चलाई. All the persons who were involved इनसे कॉमन इंटेंशन वगैरह, जो अगर डेक्लेरेंट को पता है तो वो भी कॉजिंग डेथ के अंदर आते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ हियरसे. हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन है डाइंग डिक्लेरेशन, कि कोई और आदमी बता रहा है, वो तो मर चुका है. दैट इज वाई. इसका प्रिंसिपल क्या है? इट वॉज लेड डाउन बाय दशरथ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 2008 Supreme Court. Dashrath versus State of Madhya Pradesh, 2008 Supreme Court. A man would not like to meet his master with a lie in his mouth. And this is the reason why Dashrath versus State of Madhya Pradesh, there is no need for an oath. And that is the reason why the need for an oath and cross-examination are dispensed with.
इसीलिए ऐसे केसेस में ना ओथ की जरूरत है ना क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत है. What should be the language of a dying declaration? The dying declaration, as far as possible, should be recorded in the language of the declarant. Whenever the language of जो उसकी language है declarant की उसे में record की गई हो तो it gives strength, it makes it more reliable. On this we have the Supreme Court, State of Karnataka versus Sharif, State of Karnataka versus Sharif, SHARIFF 2003 Supreme Court, जहां पे deceased ने made a statement in Kannada and it was recorded in Kannada. It was held that it was more reliable. But where the questions were asked by the magistrate in Sindhi, replied in Sindhi, but then translated to a constable जो लिख रहा था in हिंदी, जो रिकॉर्ड कर रहा था मराठी में, बातचीत हो रही है सिंधी में, जो लिख रहा है उसको वो बता रहा है हिंदी में, और लिख रहा था वो कांस्टेबल मराठी में, क्योंकि मराठी कोर्ट लैंग्वेज है. ऐसे मामलों में it was held that it is a weak type of dying declaration. It cannot now be taken as a substantive piece of evidence. ये मामला आया था दीपक बजाज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1993 सुप्रीम कोर्ट. However, it is not the reason to be discarded, but only I said it becomes a weaker type of evidence. So, जहां पे different language में आपने रिकॉर्ड कर ली, उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे हम, पर उसको अब हम रूल ऑफ कॉशन अप्लाई करेंगे, रूल ऑफ प्रूडेंस अप्लाई करेंगे. Alone, it cannot be taken as a substantive evidence. Now, अब डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कौन करेगा? डाइंग डिक्लेरेशंस अगर मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया तो देन इट इज द हाईएस्ट प्रोबेटिव वैल्यू. मेनी टाइम क्योंकि 174 की कार्रवाई में एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट होता है, तो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट जो रिकॉर्ड करता है उसकी वैल्यू बहुत होती है. अगर कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करता है उसकी भी वैल्यू बहुत होती है. सो वेयर द मैजिस्ट्रेट गिव्स, इवन कोई डॉक्टर नहीं है अवेलेबल ये सर्टिफाई करने के लिए कि फिट कंडीशन है, और मैजिस्ट्रेट ने उसका बयान लिया, डाइंग डिक्लेरेशन लिया, दैट कैरीज हाईएस्ट एविडेंशियरी वैल्यू इवन अगर डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है. This matter came up in the Supreme Court, Premchand versus State of UP, 1994 Supreme Court. But then there is no such requirement that a dying declaration must be taken by a magistrate. ऐसा कुछ नहीं है. तो जरूरी नहीं है कि मैजिस्ट्रेट ही ले, और अगर मैजिस्ट्रेट नहीं ले रहा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है, वो तो बहुत गलत हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. This came up in Supreme Court, कुलवंत सिंह versus State of Punjab 2004 कि it is not nowhere written कि मैजिस्ट्रेट ही ले सकता है, कोई भी ले सकता है. Only thing is now it has to be looked at with greater caution. Dying declarations normally, क्योंकि आदमी हॉस्पिटल में होता है, मर रहा होता है, dying declarations are recorded by doctors. They are worthy of evidence, definitely. But then I said that a dying declaration recorded by a judicial magistrate has a higher evidentiary value than if it is taken by any ordinary person. This was covered by Samadhan Kohli versus State of Maharashtra, Samadhan Kohli, K-O-L-I, Samadhan Kohli versus State of Maharashtra, 2009 Supreme Court. Now, when a doctor is taking
he must have witnesses. Because hospital में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होती हैं. Whenever a doctor is taking any dying declaration, it's always advisable that there must be witnesses. And otherwise, a lot of questions arise. The standard form is always question and answer form. हमेशा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में जब भी कोई डाइंग डिक्लेरेशन होता है, इट कैरीज मोर वेट. हाउएवर इट इज नॉट कि नैरेटिव में नहीं दे सकते, नैरेटिव में भी होता है, बट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म इज ऑलवेज द बेस्ट suited for reliability. What happens if a police officer takes a dying declaration? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. ऑन दिस पहले हम लिख लेते हैं इसके ऊपर. वी हैव धुलाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. राजस्थान हाई कोर्ट 1995. We also have Pyarelal Rana versus State of West Bengal, 1992 Calcutta High Court. It was held that a dying declaration recorded by a policeman is not self-condemned. You cannot say that throw it into the dustbin. It is not like a confession of an accused. It is statement of a victim. Ipso facto, because a police officer is recording a dying declaration, is no reason to condemn it or to trash it. सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज इसमें और क्लियर की है. शेख रफीक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. State Rafiq versus State of Maharashtra, 2008 Supreme Court. If a police officer is recording, there must be independent witnesses. If there are no witnesses, no doctors, no nurses, nobody is present, then what was the reason? Why could not he get any independent witness? Did he immediately send the dying declaration to the police station? Did he send it immediately to the executive magistrate? All these questions will now come into question. Where the police officer, despite the fact that doctors were available, despite the fact that the time was enough to call an executive magistrate, no fitness certificate was taken from the doctor. There was no ostensible reason why he took it himself, and why did he not call anybody else when they were easily available. Then the Honorable Supreme Court said, now the dying declaration is no longer sacrosanct. अब ये sacrosanct नहीं है. So please remember, police officer अगर कोई record करता है dying declaration ipso facto, it does not become a reason for rejecting it. But then there must be cogent reasons for recording it himself. What are those cogent reasons have to be proved to the court. Now the rule of caution comes in. And most important aspect is, were there no other witnesses available? What was the dire need of a policeman to record a dying declaration when independent witnesses like the doctors, etc. were available? Or if he had time enough to call the executive magistrate? If he cannot answer these properly, then the dying declaration loses a lot of steam, cannot be relied upon much. This is what was held in this 2008 Supreme Court judgment of Sheikh Rafiq.
On police officer recording a statement, I have another judgment. This is C. Cheliminabi, Cheliminabi, C. Chelinabi versus State of Andhra Pradesh, Cheliminabi, 2003 सुप्रीम कोर्ट. इसमें भी आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां एक डाइंग डिक्लेरेशन एक पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड की थी. In this case, the Supreme Court remarked that where the dying declaration was recorded by a police officer, police inspector, in a hospital, the evidence of the doctor was that when the patient was brought in, when the victim was brought in, he was injured but not critical. A magistrate used to live near the hospital. The doctor was not called for taking the dying declaration. The magistrate who lived nearby and the patient, when the victim, when he was brought, was not critical. Easily the magistrate could have been called. Also, the victim did not explain in detail the nature of the incident. Dying declaration was rejected. So we have many judgments on police officer taking a dying declaration. The basic aspect is that as a general rule, police officers should not take a dying declaration because they are naturally trying to prosecute. But if there is, suppose एक रात है, रात के 2 बज रहे हैं, थाने में फोन आता है कि सर एक एक्सीडेंट हो गया, यहाँ एक आदमी मर रहा है सड़क के बीच में, कोई जो नेबर है वो फोन कर देता है. पुलिस मौके पे आती है, वो आदमी मर रहा है, वो उसको उठाते हैं, वो बस फटाफट 30 सेकंड बोल के मर जाता है. Now we had no time to call any independent witness. In such cases, now I'll have to prove that there was no time to call any independent witness. Now it can be taken if it is of course coherent, reliable, and it is sure that the person who was giving the statement was in a fit condition of mind, then it can be relied upon. I hope everybody is clear on this aspect. Question पूछ लेते हैं इस पे बहुत बार. I hope everybody is clear on this. Now what about dying declaration made to a relative? Please remember, there is no bar of a dying declaration being made to interested witnesses. It carries the same weight. Only thing is, naturally, as I said, pehle the reliability of the dying declaration has to be taken by the court. So that is why, please remember, जब खासकर जहाँ dowry deaths हैं, वहाँ या cruelty के मामले हैं, merely because the dying declaration was given by the girl to her mother, is no ground for rejecting it. So please remember, merely because the dying declaration is being given to an interested witness is no ground to reject it outrightly. Only thing is, now the rule of prudence comes in and the court must be on its guard. This matter came up again before the Honorable Supreme Court in Habib Usman versus State of Gujarat, 1979, Supreme Court. Now, a dying declaration should always, what should be the form? It should be in a question-answer form. But if it is not in a question-answer form, does not mean that it is not to be relied upon. On this, we have same State of Karnataka versus Sharif, 2003 Supreme Court, मैंने पहले भी quote किया है. A dying declaration cannot be dismissed on only the ground that it was not recorded in a question-answer form. In fact, sometimes a narrative may seem to be more natural. कई बार लगता है क्वेश्चन आंसर फॉर्म वो मर रहा है तो हम क्वेश्चन आंसर उसे पूछें, नैरेटिव जो एक बार एक सांस में वो बोल रहा है या बोल रही है, वो काफी हो सकता है.
So a statement in narrative may sometimes appear more natural. So there is no reason that if it is not in question answer form, it has to be discarded. Preferably, no doubt, question answer form is the best. There are so many Supreme Court judgments on this, that preference is always to question and answer form. But merely because it is not in question answer form, it's in a narrative, is no reason to discard it. Because narration also is natural. आदमी मर रहा है, वो एक बोलता जा रहा है, अब आप उससे बोल रुको रुको मेरा अगला क्वेश्चन ये है, उसका जवाब दो. कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड always it's always advisable कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म होना चाहिए और होना भी उसमें चाहिए, बट अगर नहीं है तो उसमें कोई पहाड़ नहीं टूट जाता है. What about oral dying declarations? पहला पॉइंट ये कि ओरल डाइंग डिक्लेरेशन नॉर्मली क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशंस ओरल ही होती हैं ज्यादातर. अगर उसमें बहुत वो ठीक ठाक है तो वो लिख सकता है या लिख सकती है. बट जहां तक ओरल डाइंग डिक्लेरेशंस का सवाल है, व्हाट इज एन ओरल डिक्लेरेशन? ओरल डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? एन ओरल डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स अ स्टेटमेंट which was not recorded and reproduced by the witnesses out of their memory. कई बार क्या होता है कि इतना टाइम नहीं है कि हम उसको लिख सकें और उसके साइन करा सकें. खासकर जब कोई गोली गोली लगी है, आदमी मर रहा है, 4 लोग आ गए, उसके सामने उसने कुछ बोला और वो डाइंग डिक्लेरेशन देख के मर गया. इसको हम कहते हैं ओरल डाइंग डिक्लेरेशन. तो जहां तो रिकॉर्ड हो गया, अच्छी तरह साइन सुइन कर दिए उसने, तब तो टेंशन खत्म है. बट जहां हमारे पास टाइम नहीं था रिकॉर्ड करने का, वो बोला और मर गया. पहला पॉइंट है, इज इट एक्सेप्टेड एज एविडेंस? यस. क्यों? हमने पहले पढ़ा है वर्बल और रिटन. तो अब क्या लॉ है? ये अनदर क्वेश्चन है 5 या 7 मार्क्स का, ओरल डाइंग डिक्लेरेशंस. सो व्हाट इज एन ओरल डाइंग डिक्लेरेशन? An oral dying declaration is a declaration of the victim or the declarant which was not reduced to writing, and it is now reproduced out of the memory of the witnesses in front of whom the declarant had made the dying declaration. Now, what is the law on this? On this, I would like to quote Darshana Devi versus State of Punjab, 1995 Supreme Court, and Paras versus State of Bihar, 1999 Supreme Court. The apex court has held that whenever an oral dying declaration is taken, exact words of the declarant constituting the statement must be reproduced. एग्जैक्ट वर्ड्स बताने जरूरी हैं. एनी वेरिएंस ऑफ द वर्ड्स वुड मेजरली इफेक्ट द डाइंग डिक्लेरेशन. एक वर्ड भी इधर का उधर हो जाता है तो बहुत फर्क पड़ जाता है. कैन ओरल डाइंग डिक्लेरेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ अ कन्विक्शन? द आंसर इज यस. बट हाउएवर देन द रूल ऑफ प्रूडेंस कम्स इन. Though an oral declaration, dying declaration can form the basis of a conviction, but then such a declaration has to be proved to be trustworthy. It has to be proved that the words used are the exact words which the victim had used before dying. Also, many other aspects have to be proved. The circumstances under which the declaration was made, whether the declaration inspires confidence, what was the witness doing there, how was he available there, so many aspects. All those aspects have to be clarified before it can be made as a basis of a conviction.
What is very important is the usage of the exact words of the declarant, because a slight deviation can change the entire matter totally. Is it necessary that they have to be given to some person? What is a statement? Anything which is stated. So even if I am writing in my diary, it is a statement. So please remember, even notings in the diary can be taken as dying declaration. एक केस आया था हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का, रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 2001 का केस है ये। इन दिस केस क्या हुआ, एक सुसाइड किया था एक मैरिड वुमन ने, और उसने पूरे हालात लिखती थी, रोज डायरी लिखती थी, और उसने एंड में लिखा था ये सारे हालात जो इतने सालों से चल रहा था, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है, अब मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूं। वो क्योंकि अपने माँ बाप को तंग नहीं करना चाहती थी, उसने फोन भी नहीं किया, बताया भी नहीं था। नाउ दैट डायरी वाज इन हर ओन हैंडराइटिंग. In this case of Supreme Court, it was held to be a dying declaration of the woman who committed suicide. I hope everybody is now clear about the form and importance. Now we come to the next point, which is what about the fitness of the declarant. ये पूरा 7 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है. When I say that a dying declaration must be reliable, one of the most important aspects of reliability is the fitness of the declarant. Was he able to speak coherently? Was he able to think coherently? So many aspects come in. Was he blabbering? Was he under delusional? Was he abnormal? For a dying declaration to be made a substantive, exalted to the level of a substantive evidence, the frame of mind, the conduct, and the condition in which the statement was made becomes extremely, extremely important. Because if the dying declaration was not in a proper fit frame of mind, any declaration which he is giving cannot be taken as absolute truth. That is why coherence forms a very, very important part of a dying declaration. Not only coherence of a dying declaration, but also the coherence of the mind of the declarant. Fitness of the declarant is the sine qua non of acceptability of a dying declaration. On this we have Lakshmi versus Om Prakash, 2001 Supreme Court. The court has to be satisfied that the deceased was in a fit state of mind and capable of making the statement when it was recorded coherently. In the earlier law, in the earlier times, a certificate of a doctor was a must. If there was no certificate of a doctor regarding the fitness of the deceased while making the statement, it was rendered unacceptable. ये पहले लॉ था. एक डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर मानते थे कि एक एक्सपर्ट है, डॉक्टर ही सर्टिफिकेट दे सकता था कि वो कोहेरेंटली बात कर रहा है, वो फिट है कि नहीं डिक्लेरेशन के लिए. हमारे पास
एक केस है जयकरण वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 1999 सुप्रीम कोर्ट। जयकरण वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 1999 सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केस क्या हुआ, डॉक्टर ने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया हॉस्पिटल में, उसको पढ़ के नहीं सुनाया, उसके सिग्नेचर नहीं लिए, उसका थंब इंप्रेशन भी नहीं लिया, कोई और आदमी ने अटेस्ट नहीं किया। एक्यूज ने कहा कि मेडिकल, अपनी रिपोर्ट में बोला कि शी वॉज मेडिकली अनफिट टू गिव अ स्टेटमेंट। अब ये डैंग डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ने यूज करने से मना कर दिया। ऑलवेज अ डैंग डिक्लेरेशन मस्ट बी टेकन बिफोर विटनेसेस एज फार एज पॉसिबल। उसका अंगूठा नहीं तो कम से कम उसका सिग्नेचर, नहीं तो अंगूठा तो ले ही लो। And it must be read over to her, and then only she must put her signature or thumb impression, or he, of course. A fitness certificate by the doctor was one of the surest ways of ensuring that declarant is in a fit condition of mind. However, law changed later. एक केस आया लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 सुप्रीम कोर्ट। एक लैंडमार्क, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का केस है ये। इन्होंने सारी पुरानी जजमेंट्स को ओवररूल किया और इसीलिए लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इतना लैंडमार्क केस है। इसमें उन्होंने बोला कि जहां पे एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है regarding the fitness of the mind of the victim, it does not render a dying declaration unacceptable. What is required is कि जो भी इंसान उसका रिकॉर्ड कर रहा है स्टेटमेंट, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो कोई प्राइवेट आदमी है, he will now give a declaration, he will now certify that the person who was giving his declaration, that the declarant was in a fit state of mind. तो अब क्या हो गया, डॉक्टर का सर्टिफिकेट इज ओनली अ रूल ऑफ कॉशन, इट इज नॉट अ रूल ऑफ लॉ। तो फिटनेस ऑफ द डिक्लेरेंट को अब हम लक्ष्मण के बाद देखते हैं कि जो भी उसका डैंग डिक्लेरेशन ले रहा है वो सर्टिफाई करेगा कि वो उस टाइम पे फिट था अपना डैंग डिक्लेरेशन देने के लिए। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दिस। ये क्वेश्चन आ सकता है इसी तरह का, प्लीज डोंट गो रॉन्ग ऑन दिस। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 सुप्रीम कोर्ट। In the absence of a medical certificate of fitness, it does not render a dying declaration to be unacceptable. What is required is that the person who records the dying declaration is satisfied that the injured person is coherent, he is fit enough to give the declaration, he is in a fit state of mind. The medical certificate is a rule of caution and not a rule of law. I hope everybody is clear on this. Now there are certain questions which have been asked many times on small things. Let us cover those questions. The first thing is, if there is more than one dying declaration, then what? See, whenever there are more than one dying declarations made by the same person, naturally, पहला पॉइंट तो यह है कि जो पहली दी जाती है उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो फर्स्टली द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, दिस वाज हेल्ड इन गंगाराम गिहानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1982 सुप्रीम कोर्ट, that the earlier statement, the statement which was made earlier, must be preferred to a subsequent dying declarations. क्योंकि अर्लियर वाली सही होगी, बाद वाली हो सकता है मे बी अंडर ट्यूटरिंग और वट एवर रीजन। जहां पे टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है, जहां पे पहला ब्लैक है और दूसरा कहता है व्हाइट है,
where there are absolutely contradictory and inconsistent stands taken by the victim, then it is necessary that corroboration must take place. Then corroboration becomes the rule. If no corroboration is possible, and even after corroboration the मामला बहुत पेचीदा लगता है, then the dying declaration has to be rejected. Merely because there is more than one dying declaration, it does not mean that it has to be rejected. All the dying declarations must be read together, and then the court must try to take out the truth, especially when it is corroborated. So whenever there are more than one dying declarations, all of them have to be read together. If there is any discrepancy, corroboration must be relied. If they are totally contradictory, then of course it becomes a weak piece of evidence. If they are totally inconsistent and contradictory, and corroboration also does not throw any light, it again confuses the matter, then of course it cannot be relied upon. This is the settled law on more than one dying declarations. The next point which we take over, again a very important question which has come up. Now one thing you must remember, that here is a cause of death. Very, very important aspect is, cause of death can be homicidal, cause of death can be suicidal, दोनों है. So cause of death does not mean that it is homicidal, murder है. Suicidal में भी है 32. So दोनों पे apply करेगा. Wherever it is any cause of death, then 32 comes in. Now, one more important aspect is the proximity of time. ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 सुप्रीम कोर्ट में. The more remote the cause, the weaker the evidence. जहां पे इस केस में एक लड़की जो सुसाइड किया, वो 4 महीनों से चिट्ठी लिख रही थी अपने माँ बाप को. डिफेंस ने कहा कि सर ये तो बहुत पुरानी बात हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इतना पुराना नहीं है, 4 महीने ज्यादा पुराने नहीं होते. और सेक्शन 32 uses the word circumstances of the transaction. We can use this whole as circumstances of the transaction, और उसको हम यूज कर सकते हैं as a dying declaration. अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट उठता है, can FIR be used as a dying declaration? जहां पे there was a person who was dying and he lodged an FIR. पुलिस पहुंच गई, उसने कहा जी मेरी FIR लिखो, और FIR लिखवा के वो थोड़ी देर बाद मर गया. Now this FIR became a piece of dying declaration. This was a dying declaration. ये मामला आया था एक, this matter came up State of Uttar Pradesh versus Chetram. Uttar Pradesh versus Chetram, CHETRAM, 1989 सुप्रीम कोर्ट. और भी हैं, बालक राम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1970, और बहुत सारे हैं, जहां पे पुलिस ने FIR दर्ज कर ली ऑन द
at the behest of the victim. पता चला लड़की का कि एक लड़की जली हुई कंडीशन में हॉस्पिटल में पहुंची है। सब इंस्पेक्टर भागा गया। वो लड़की ने कहा कि जी मैं अपने पति के खिलाफ एक दर्ज कराना चाहती हूँ एफआईआर। मेरे पति ने मुझे जला के मारा है। वो एक लिखती है, एफआईआर लिखता है वो। थोड़ी देर बाद वो लड़की मर जाती है, साइन करती है, मर जाती है। This FIR now can be used as a dying declaration. I hope everybody is clear on this. एक क्वेश्चन जो अभी थोड़े 1-2 साल पहले पूछा गया था इंटरव्यू में, if I'm not wrong, ADJ में पूछा गया है, I forget, या शायद लोअर में पूछा है, मैं भूल रहा हूं। The question asked was whether 161 CRPC statement can be used as a dying declaration. Let me give you a little background. अभी क्योंकि हमने सीआरपीसी नहीं पढ़ी है, जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो इट टेक्स द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस। तो जहां एक 161 का स्टेटमेंट लिया किसी का और वो मर गया, ना 161 पुलिस लेती है, 161 साइंड नहीं होता, विटनेस साइन नहीं करता है, क्या फिर भी उसको यूज कर सकते हैं? और 161 का स्टेटमेंट, प्लीज रिमेंबर, एज पर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, कैन बी यूज्ड ओनली टू कॉन्ट्राडिक्ट द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट। क्योंकि 162 सीआरपीसी कहता है कि जो भी 161 के बयान होते हैं, जो 161 के स्टेटमेंट्स होते हैं, वो सिर्फ उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, उनको कॉरोबोरेट करने के लिए नहीं किए जा सकते। इस सारे दिमाग में रखते हुए अब क्वेश्चन ये उठा कि अगर मैं बाई चांस पुलिस को एक 161 का स्टेटमेंट दिया था, साइंड भी नहीं था, और अगर द पर्सन डाइज, कैन इट बी यूज्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन? ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये नया केस है कंपैरेटिवली। दिस मैटर केम अप इन मुकेश भाई गोपाल भाई बारोट, मुकेश भाई गोपाल भाई बारोट, BAROT वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2010 सुप्रीम कोर्ट। इट वाज हेल्ड कि अगर कोई स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी, it may be treated as a dying declaration if the declarant died. अगर वो मर गया तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, प्लीज डोंट गो रॉन्ग। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है, will it be hit by section 162? Now please remember, a dying declaration is excluded from 162. That means any dying, अगर 161 कोई ऐसा ले लिया स्टेटमेंट जो एक डाइंग डिक्लेरेशन है, तो वो corroboration के लिए भी यूज हो सकता है। दिस इज वन क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आई हैव गिवन यू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन दिस, इसको कोट करना है, ये बहुत जरूरी है। सो प्लीज रिमेंबर, if it is the 161 CRPC statement taken by the police, no doubt the rule of caution will apply. जो हमने सारे cautions की बातें की हैं, वो सारे अप्लाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, there is no doubt about it. But then most important thing क्या है इसकी, कि 161 CRPC, क्योंकि ये एक बेस्ट एविडेंस रूल है। पुलिस वाले ने 161 लिख लिया और है नहीं, डाइंग डिक्लेरेशन बन गया, वो मर गया आदमी, उसने रीजन बताया कि मैं कैसे मुझे मारा हूं। Now that can be used as a dying declaration. Please remember, it can be contradicted under section 158. Court will be now on its guard.
कि पुलिस ने लिया है, पर अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो 161 का स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन. आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. दिस इज वन क्वेश्चन विच अगर मैं एग्जामिनर होता 101% डालता. अब आता है एक और इशू, व्हाट इफ द डिक्लेरेंट सर्वाइव्स. मैंने डाइंग डिक्लेरेशन दिया और बच गया. नाउ प्लीज रिमेंबर, डाइंग डिक्लेरेशन मींस बेसिकली अ पर्सन हु इज डेड. If he is not dead, then a dying declaration cannot be used under section 32. Now, उसका वैल्यू क्या है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है. Since section 32 deals with those persons who cannot be summoned to the court. Now here is a person who has survived. He can come to the court. So section 32 में यूज नहीं होगा. But now, मैंने आपको बताया था पहला, जब एडमिशंस अगर मेरे फेवर में हो तो यूज हो सकती है. पहला 21 में हमने देखा था. एक डाइंग डिक्लेरेशन एक सैंक्टिटी के साथ लिखा जाता है. प्रिजम्पशन है कि वो सच बोल रहा है. और खासकर अगर डाइंग डिक्लेरेशन मैजिस्ट्रेट ने लिया है तो वो 164 सीआरपीसी का स्टेटमेंट की तरह यूज किया जा सकता है. एक डाइंग डिक्लेरेशन अगर डिक्लेरेंट बच जाए डज नॉट बिकम अ 161 सीआरपीसी स्टेटमेंट. 161 सीआरपीसी का जो स्टेटमेंट होता है वो सिर्फ मेरे खिलाफ यूज किया जा सकता है. इट कैन ओनली बी यूज टू कॉन्ट्राडिक्ट मी. इट कैन नॉट बी यूज टू corroborate मी. 161 बिकॉज ऑफ 162 सीआरपीसी. बट डाइंग डिक्लेरेशन की सैंक्टिटी इतनी है कि अगर वो बोलने वाला, डाइंग डिक्लेरेशन देने वाला बच गया, इट कैन बी यूज टू corroborate. जब वो बाद में आएगा कोर्ट में और वो कहेगा जी मुझे इसने मारा है और मैंने ये डाइंग डिक्लेरेशन भी दिया थे, तो भगवान की दया है कि मैं बच गया. नाउ his statement can be corroborated under section 157 Evidence Act. अब इस चीज को वो जो कोर्ट में अंडर ओथ बोल रहा है कि सर इसने मुझे मारा है और इस चीज को मैंने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में भी बोला था, corroborate हो गया. तो प्लीज रिमेंबर, डाइंग डिक्लेरेशन अगर डिक्लेरेंट बच जाए कैन बी यूज्ड टू contradict and corroborate him both. So it can be used to corroborate his later statement in the court under section 157 Evidence Act. इसके ऊपर प्लीज राइट डाउन वेरी क्विकली. मैं इसको डिक्टेट करूंगा, ये क्वेश्चन आएगा. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये जो पूरा लॉ है, ये कौन से विच आर द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स? स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस वीर सिंह. स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस वीर सिंह 2004 सुप्रीम कोर्ट. रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2011 सुप्रीम कोर्ट. Please write down. The statement of a person regarding the cause of his death, relevant as dying declaration under section 32. If he survives, cannot be used under section 32 because it is not covered by the term statement of witness who cannot be called to the court. However, it may be relevant under section 157 Evidence Act, and if it was taken by a magistrate, it may be taken as a statement under 164 CRPC. The dying declaration of a declarant who survives
cannot be considered as a statement under 161 CRPC to be used only for the purpose of contradicting him, but also can be used for the purpose of corroborating him. A dying declaration has a higher value and is taken as a superior quality of evidence vis-a-vis statements made under 161 CRPC. They can be used under Section 157 Evidence Act for the purpose of corroboration. Next point comes in, can declarations, dying declarations be by nods and gestures? क्या gesture से किसने मारा है? उसने. Can this be allowed? This matter again came up before the Supreme Court. M. Ramakrishna versus State of Andhra Pradesh, 1994 Supreme Court. There is no bar on a dying declaration being by nods and gestures. Sign language is also a statement. So any dying declaration made in a sign language is admissible as a dying declaration. इसके ऊपर एक बहुत पुराना केस भी है हमारे पास, अब्दुल्ला का, आर वर्सेस अब्दुल्ला. एक प्रोस्टिट्यूट का गला काट दिया था, वो उसने नॉड्स एंड जेस्चर से बताया था. इट वाज, तो प्लीज रिमेंबर, नॉड्स, जेस्चर, साइन लैंग्वेज, किसी भी, तो डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट किसी भी तरह दिया जाए, चाहे वो राइटिंग में दिया जाए, चाहे वो जुबानी दिया जाए, चाहे वो साइन लैंग्वेज में दिया जाए. मेन बस ये है, इट शुड बी डिटर्मिनिंग माई कॉज ऑफ डेथ. ये बेसिक एस्पेक्ट है. आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स व्हिच आई कुड थिंक ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. आई नो इट्स अ हेवी लेक्चर. डाइंग डिक्लेरेशन पर बहुत इंपॉर्टेंट था. आई होप ऑलमोस्ट 2 लेक्चर लग गए. इट विल नॉट बी फेयर फॉर मी, तो अभी मेरे पास 7 मिनट है और मेरा दिल दुखता है जब मैं जल्दी लेक्चर खत्म 7 मिनट वेस्ट करता हूँ. बट आई फील के यू नीड टाइम टू राइट ऑल दीज थिंग्स. बहुत सारी जजमेंट्स आज मैंने लिखवाई हैं, बहुत सारे डिक्टेशंस हैं. इट्स, आई थिंक, fair enough to stop the lecture here and take it up from here next time. Thank you. God bless.